Hello viewers, today I am going to discuss D block of elements, a topic in class 12 chemistry. When last electron of the atom enters into D subcell of penultimate net orbit, मतलब second last, it is called D block of elements. They are placed in group 3 to 12 in modern periodic table between S and P block of elements. फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम टू जिंक 3D सीरीज कहलाता है। फिफ्थ पीरियड में इथेरियम टू कैडमियम फॉर 4D सीरीज कहलाता है। 3D सीरीज मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जा रहे हैं। 4D सीरीज मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में जा रहे हैं। सिक्स पीरियड में लेंथेनम के बाद बीच में 14 लेंथेन वाइट्स आते हैं, इसलिए लेंथेनम। उसके बाद हैफ्नियम 72 टू मरकरी 80। 5D सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सबसेल में जा रहा है। सेवेंथ पीरियड में एक्टिनियम के साथ साथ ये IUPAC नोटेशन है, यूनिनिल क्वाडियम 1042, यूनियन बायम 63। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है नोबल गैस N-2 F14, N-1 D1 to 10, NS0 to 2। मोस्ट केसेस में NS2 होगा, लेकिन सम रीअरेंजमेंट के कारण 0 और 1 हो सकता है। और ये 4F सबसेल जो F14 है, ये आपको 6th and 7th पीरियड में मिलेंगे, 4th and 5th पीरियड में नहीं मिलेंगे। नाउ transition element, definition of transition element, very important. The D block of element which atom or any commonly occurring cation has incomplete D subcell is called transition element. Like iron 3D6-4s2 incomplete D subcell, 2 cations ferrous and ferric both has incomplete D subcell. Copper 3D10-4s1 complete D subcell. क्यूपरस आयन 3D10 अभी तक सबसेल कंप्लीट है, बट क्यूपरिक आयन 3D9 इनकम्प्लीट दी सबसेल। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 लाइक जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट फिजिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर एटम एंड कैटायन हैव D10 configuration, so they are called pseudo transition element and their chemistry is studied with chemistry of transition element. Zinc 3D10-4s2 and Zn2। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 3D सीरीज है, ये मेंबर्स हैं, एटॉमिक नंबर है। एंड 3D4s स्कैंडियम 3D1-4s2, टिटेनियम 3D2-4s2, वेनेडियम 3D3-4s2। क्रोमियम में रीअरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3D5-4s1, मैग्नीज 3D5-4s2, आयरन 3D6-4s2, कोबाल्ट 3D7-4s2, निकेल 3D8-4s2, कॉपर 3D10-4s1, अगेन रीअरेंजमेंट अकर, एंड जिंक 3D10-4s2। ये 4D सीरीज मेंबर्स एटॉमिक नंबर विथ इलेक्ट्रॉनिक, देयर आर सेवरल एनोमली जिसको आपको याद रखना है। And 5D series. Effective nuclear charge. The charge of part of the charge of nucleus which is effective on valence electron of the atom. The effective nuclear charge arises due to electrons having shielding effect less than 1. These are electrons of outer 2 orbits and F subcell of inner orbit. The Z effect will increase in atomic number. It increase with increase in atomic number in a period. In a group, Z effective for 3D and 4D
are almost same. Are same, but last remember 5D series has greater value of jet effective due to presence of 14f electrons in inner orbit having poor shielding effect. एटॉमिक रेडियस यानी आयनिक रेडियस दिखा रहा हूं, देखिए फर्स्ट हाफ में क्रोमियम तक डिक्रीज कर रहा है, मैग्नीज का एक्सेप्शनली ज्यादा है, उसके बाद सेकेंड हाफ में कॉपर तक ऑलमोस्ट सेम है, जिंक का ज्यादा है। तो क्रॉस ए पीरियड आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर सेम है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इज more protons are added to nucleus, but atomic number as a result of nuclear force on electron of outermost orbit increases and atomic radius would decrease. Atomic number के increase से nucleus में प्रोटॉन ऐड होते चले जाएंगे, इससे nuclear force on electrons of outermost orbit becomes stronger and stronger, resulting decrease in atomic radius. The d electrons of penultimate orbit has a smaller shielding effect than s and p electrons, leading a smaller increase in atomic radius. So then s and p block up. In second half of transition series ये important है, जहां atomic radius almost same हो जा रहा है, equal because increase in nuclear charge is compensated by increase in shielding effect of d electrons. Electrons this penultimate में आ रहे हैं, तो shielding effect न्यूक्लियर चार्ज को घटाएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है वो ऑलमोस्ट कंपनसेटेड बाय shielding effect, इससे एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक हैज एक्सेप्शनली ग्रेटर एटॉमिक रेडियस ड्यू टू presence of half and completely filled substance. मैग्नीज में ये हाफ फिल्ड है और कॉपर और जिंक में कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड सबसे हो जाने के बाद सबसे थोड़ा सा एक हाफ फिल्ड या कंप्लीट स्टेबल मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड करे और रेडियस इंक्रीज करे। In a group, atomic radius would increase with increase in atomic number due to addition of an extra orbit. But a very important point: members of 4D and 5D series has almost equal atomic radius due to length and wide contraction. आपने पढ़ा लास्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है 4s इलेक्ट्रॉन के कारण, ये रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. Transition metal except zinc, cadmium, mercury group 12 are very hard, malleable, ductile, metallic solid. The metallic solid of transition metals are held together by metallic bonds along with covalent bonds formed by sharing of unpaired electrons of these substances. यहाँ मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट लिंकेज भी रहता है, इसलिए सॉलिड काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है. सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज ड्यू टू इंक्रीज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट हाफ व D1, D2, D3, D4, D5 यहाँ तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट लिंकेज इंक्रीज करेगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा. और सेकेंड हाफ में D6, D7, D8, D9 अब पेयरिंग होने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा. देखिए इंपॉर्टेंट चीज, Mn है एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू enthalpy of atomization and low melting point and low enthalpy of atomization because of a stable D5 configuration. Mn में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होता है बिकॉज इट हैज D5 कॉन्फ़िगरेशन, सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट लिंकेज बहुत लो हो जाता है, कोवेलेंट लिंकेज कम होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. मेल्टिंग पॉइंट इंथैल्पी should increase down the group is increasing N-1 and Ns level decrease in energy.
N-1d और ns में एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाता है, इसलिए डी इलेक्ट्रॉन मोर एंड मोर अवेलेबल होते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. Tungsten has maximum melting point. Density, the decrease in metallic radius. आप देख रहे हैं ग्रुप में मेटेलिक रेडियस, एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, इससे डेंसिटी इंक्रीज करेगा कॉपर का. इन ए ग्रुप डेंसिटी अगेन इंक्रीज करेगा ड्यू टू एटॉमिक मास का इंक्रीज काफी ज्यादा है. एंड ऑस्मियम हैज मैक्सिमम डेंसिटी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप जनरल ट्रेंड देखें तो एक ग्रुप में रेडियस डिक्रीज कर रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड increase in a period due to increase in effective nuclear charge and decrease in atomic radius. The regular trend of I1 in a period of 3d3 थोड़ा सा irregularity है due to fact that removal of electron from 4s orbital alters relative energy of 3d and 3d और 4s के बीच का एनर्जी डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से चेंज होता है, इसलिए कुछ irregularity आती है. Second, I of chromium and copper are exceptionally high because chromium का configuration 3d5 4s1 है और copper 3d10 4s1 है. तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन d5 या d10 से निकाला जा रहा है, इसलिए इनकी सेकेंड एनर्जी ज्यादा होती है. I2 of zinc is exceptionally low because Zn2 plus सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जिंक d10 कंफिगरेशन अचीव करेगा जो सूडो इनर्ट गैस कंफिगरेशन करते हैं. इन ए ग्रुप I of last number is maximum due to little effective nuclear charge arising because of presence of 14 f electrons in inner orbital of 4 cm. ट्रांजिशन एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट. The transition elements form compounds in variable oxidation state due to participation of unpaired electrons of d subshell penultimate orbit along with s electrons of outermost orbit. This unique property is due to fact that energy difference between n-1d and ns कम होता है. The compounds have lower oxidation state +1 +2 appears due to loss of electron from s orbitals of outermost orbit. So it has ionic character. Compounds in higher oxidation state have covalent character because formed by pairing of unpaired electrons of d subshell. So maximum oxidation state achieved in middle of transition series because maximum unpaired electron 3d5 at the middle of the series. जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है 3d1 3d2 3d4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना, फिर इसके बाद पेयरिंग शुरू हुआ तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है. द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट कैन बी कोरिलेटेड विथ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन. d0 में ऑक्टेट कंफिगरेशन होगा, d3 स्टेबल होगा ड्यू टू हाफ फिल T2 लेवल, d5 स्टेबल होगा ड्यू टू हाफ फिल T2G एंड Eg लेवल बोथ, d8 स्टेबल होगा ड्यू टू कंप्लीटली फिल T2G लेवल एंड हाफ फिल Eg लेवल, एंड d6 completely both T2G and Eg levels are complete or it is for pseudo inertia. The difference between n-1d and ns level decreases with increase in value of n. Difference decrease करेगा. So n-d electrons are readily available for bond formation. इसलिए जैसे जैसे आप लोअर जाएंगे ग्रुप में टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट लिंकेज इंक्रीज करेगा. So stability of compound in higher oxidation state increases down the group and stability of compound in lower oxidation decreases down the group. The compounds of higher oxidation are generally found with most electronegative elements like chlorine and oxygen, जो मैक्सिमम ऑक्सीजन अचीव होगा. कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन आर मोर कॉमन ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. ये कारण की कम क्लोरीन के साथ यहाँ +7 क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन 4 से ही काम चल जा रहा है, मल्टीपल यहाँ स्टेरिक इफेक्ट कम होता है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर
The tendency of transition metal to form M2 plus ion in aqueous solution by losing electrons is called electropositive character. इसे 3 स्टेप में दिखा सकते हैं। फर्स्ट एटोमाइजेशन, सॉलिड टू गैस, इसको सब्लिमेशन कहिए या एटोमाइजेशन कहिए। अब ये गैसीय एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो I1 और I2 दोनों का सम होगा। M2 प्लस प्लस एक्वस एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन इंथैल्पी ओवरऑल ऐड करके ये डेल्टा HF हुआ। डेल्टा HF ये चारों एनर्जी टर्म के सम के बराबर होगा। ये डेल्टा, अब देखिए डेल्टा HF का वैल्यू मोर निगेटिव हो या लेस पॉजिटिव हो, ये प्रोसेस आसान होगा। मोर निगेटिव और लेस पॉजिटिव बिकम्स oxidation of metal ion easier, so its oxidation potential should be higher and reduction potential should be lower. ये डेल्टा HF दिया हुआ जो पीरियड में मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जा रहा है, इस कारण से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा एंड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। लेस निगेटिव है मतलब इंक्रीज कर रहा है। न इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विद द ग्रुप डिक्रीज करेगा। ये मोर पॉजिटिव है मतलब प्रोसेस मुश्किल होता जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन मुश्किल हो रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज करेगा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा एंड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर दिख रहा है। मैग्नीज has exceptionally high electropositive character, मतलब high oxidation potential और low reduction potential because of very low ionization enthalpy. Trend of M3 plus M2 plus value. M3 plus is reduced to M2 plus. If depends on relative stability of M3 plus and M2 plus. If M2 plus is less stable, M2 plus is less stable, then M3 plus ion, then reaction occurs in M2 plus ion is sorry. M3 plus ion is less stable than M2 plus. Right. The reaction occurs in forward direction. M3 plus less stable, resulting greater value of E0, and M3 plus behaves like oxidizing agent, and M2 plus behaves like reducing. कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। Sp3 प्लस Sp2 प्लस, Sp3 प्लस के पास ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन नॉन फिजिबल होगा, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में आ रहा है। M2 प्लस मोर स्टेबल है विद D5 कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए रिडक्शन आसान होगा। M3 प्लस M2 प्लस बिकम्स ग्रेटर। Ni2 प्लस D8 more stable than Ni3 plus, so is greater. एक याद रखना, CO3 plus is maximum in the cell. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं, राइज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसेल 4s into x plus 1, और ऐसे टोटल स्पिन क्वांटम और हम कॉम्प्लेक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। complex forming tendency, transition metal has great complex forming tendency due to a small size, greater charge and presence of vacant D. Color of compound already discussed in coordination chemistry. Transition metal ion aqueous solution and compounds are lower of their color due to DD transition. And aqueous solution transition is considered as aqua complex. So D0, D5, D10 are colorless and they are color. Some transition metal compounds in maximum oxidation are colored due to charge transfer, which involves transfer of electrons between 2 atoms.
In this case, electrons are transferred from oxygen atom to manganese atom. Catalytic property. Transition metals and their compounds are widely used as catalysts. The catalytic property arises due to ability to form compounds in variable oxidation state. The catalyst forms chemical bond with reactant molecules, which results in increase in concentration of reactants on the catalytic surface and also weakening of bond in reactant molecules. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कैटलिस्ट के. Formation of interstitial compounds. When a small non-metallic atom like hydrogen, carbon, nitrogen, boron are trapped in interstitial space metallic solid, it is called interstitial compound. It has a higher melting point than pure metal, harder than pure metal. All metallic properties have all metallic properties, less reactive than pure. एक very important point. Group 7, 8 and 9 इसको mark करना. 7, 8 and 9 do not form interstitial hydrides and therefore as hydride gas. Alloy formation. The homogeneous mixture of two or more metals is called alloy. It consists of metal atoms of comparable size. The transition metal atom has comparable size, so they form alloy. The alloys are hard and have high melting point. Thank you. Subscribe my channel. Also share with your friends